Good evening and welcome everyone to our daily YouTube live class। और आज इस daily YouTube live class में हमारा टॉपिक है नीट पीजी का सैम्पल पेपर सैम्पल टेस्ट नंबर 2। If you recall, on 14th itself we had conducted sample paper test number 1 और आज हम करने वाले हैं सैम्पल पेपर टेस्ट नंबर 2। See, the whole idea in these tests are basically to train every student in the subject of forensic medicine, and not only train them but to enable them enough in every possible way, so that when they sit in their NEET PG examination they are able to correctly answer all the questions of the subject। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हमारा है सैम्पल पेपर टेस्ट नंबर 2, जिसमें हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। Okay, so before we progress there, let me have a small introduction of mine. My name is Dr. Sumit Tellewar. I am MD in Forensic Medicine. मैं आपका टीचर हूँ इस YouTube लाइव क्लास पे जो कई महीनों से आपके साथ लाइव है with the context of preparing each individual for NEET PG examination 2021। और मैं अपने द्वारा एक्यूमुलेटेड जो भी एक्सपीरियंस है पास्ट का वो आपके साथ लाइव आता हूँ और शेयर करता हूँ ऑन दिस पोर्टल, सो दैट हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट को पूरा कर पाए। Now there are going to be lot of queries inside of that context with lot of individuals, और ऐसा हो सकता है कि beyond our approach on this live चैनल आपकी कुछ क्वेरीज एड्रेस करनी होंगी। उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम ऐप पे। द लिंक वुड बी livedaily.me/neetpg। इट्स अ सिंपल प्रोसीजर। यू जस्ट नीड टू डाउनलोड टेलीग्राम ऐप अगर आपके फ़ोन में ऑलरेडी नहीं है, एंड देन यू जस्ट नीड टू फॉलो दैट लिंक सो दैट योर क्वेरीज कैन कम टू मी। फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो नीट पीजी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट पीजी एग्जामिनेशन की तैयारी करना शुरू करने वाले हैं, देयर इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी विच हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू यू बाय अनअकैडमी, एंड दैट इज़ अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर नीट पीजी प्रिपरेशन इज़ एन अनपैरेलल्ड सब्सक्रिप्शन, जहां पर आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस। ऑल द लाइव क्लासेस आर इंटरैक्टिव विद एजुकेटर। लाइव क्लासेस का मतलब क्या होता है? दैट यू आर एक्चुअली सिटिंग इन अ क्लासरूम विद एन एजुकेटर लाइव। बिल्कुल आपको क्लासरूम वाली फीलिंग रहती है। एंड बाय द वे, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लाइव क्लास अपनी मिस कर लेते हो तो भी आपके लिए वो वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, विच यू कैन गो बैक एंड प्ले एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एज यू वांट। देयर इज़ नो अपर कैपिंग towards the possible number of hours if you have taken the subscription, which is very very brilliant, because हर एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, जब तक उसको पूरी तरीके से समझ में नहीं आता, he should be able to reread into the lines told by the educator। उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेरी रहती है, you have live doubt clearing sessions with your educator। It's a wonderful platform which is created on a wonderful web based interface, और उस इंटरफेस को आप पर्सनली एक्सपीरियंस कर सकते हो इन स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस आर एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जिन पे जाकर के आप अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। यू कैन बिकम अ लाइव पार्ट ऑफ एन अपकमिंग स्पेशल क्लास। और जो पुरानी स्पेशल क्लासेस हैं जो एडुकेटर पहले ही ले चुके हैं, वहाँ पर भी आप उनके प्लेबैक देख सकते हो। सो आई एम इन्वाइटिंग यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई अपकमिंग नेक्स्ट स्पेशल क्लास, दैट इज़ टुमारो एट 12 noon। वो सारा डिटेल, वो सारी स्पेशल क्लासेस जो अब आने वाली हैं वो आपको मिल जाएंगी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। ऑल यू नीड टू डू इज़ ईदर डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप इन योर फोन, या फिर आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से unacademy.com पे जाकर के
अपकमिंग सारी स्पेशल क्लासेस की डिटेल्स देख सकते हो, एंड यू कैन एनरोल फॉर ऑल ऑफ देम एंड बी अ पार्ट ऑफ द लाइव स्पेशल क्लास प्रोग्राम। और ये सब करने के बाद आई एम श्योर यू विल गेट नो डाउट इन योर माइंड कि आपके लिए अनअकैडमी का नीट पीजी प्रिपरेशन यानी कि प्लस सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट वन टू हैव। जब आप नीट पीजी का प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे, माई एडवाइस वुड बी टेक अ सब्सक्रिप्शन विच इज बल्क, ज़्यादा महीने का सब्सक्रिप्शन, बिकॉज ये काफ़ी बचत कराता है आपकी, बिकॉज दे कम ऑन सब्सिडाइज्ड ऑफर्स एंड ये आपको कमिट कराता है अपने गोल की तरफ। माई रेफरल कोड वुड बी DRSUMITLIVE। ये रेफरल कोड आप सब्सक्रिप्शन लेते समय यूज़ कर सकते हैं टू गेन 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट फॉर योर सेल्फ। चलिए जी आगे चलते हैं और आज का सैम्पल टेस्ट नंबर 2 शुरू करते हैं, जहां पर हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि बेस्ड हैं आइडेंटिफिकेशन पे। लेट्स पिक अप आवर क्वेश्चन नंबर 1 which says corpus delicti refers to a very important question from the chapter of identification, very direct and very simple question which is having a legal word called as corpus delicti. Corpus delicti basically refers to essence of crime. Okay, essence of crime. कॉर्पस डिलिक्टाई के बहुत सारे पार्ट होते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि हम एसेंस ऑफ क्राइम किस चीज़ को कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी से दैट इफ़ यू आर पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिंग टीम विच इज़ इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम सीन, और आप क्राइम सीन पे जाते हो, आप देखते हो देर इज़ अ रूम इन विच ऑल द फर्नीचर एंड द पैराफर्नेलिया इज डिस्टर्ब्ड, सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है, एंड इन द सेंटर ऑफ द रूम देर इज़ अ डेड बॉडी who is having a stab wound in his chest, or maybe there is a knife that you can see stabbed into the chest of that dead body. Okay, ये जब चीज़ आप पहली बार देखते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहली थॉट क्या आती है? आपके दिमाग में सबसे पहली थॉट आएगी that this is a case of homicide, somebody has killed that person via that weapon. Now that is corpus delicti. The essence of crime is homicide. Okay, now if you want to go about investigating of this homicide, then there are lots and lots of areas to investigate. The primary important areas would be number 1, who is dead. So identification of the victim becomes a part of corpus delicti. Then second would be what is the reason for the crime to happen. Even the motive becomes a part of corpus delicti. And third would be the weapon of offense, which you can see a knife being stabbed on the chest of the dead body. Is this weapon of offense, or there could be some other weapon of offense also? Even the weapon of offense or the weapon involved in crime becomes a part of corpus delicti. तो कॉर्पस डेलिक्टाई बेसिकली एसेंस ऑफ क्राइम होता है, और जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में अभी देखा कि हम जब इस तरीके का कोई क्राइम विजिट करेंगे, वी विल स्टार्ट टू इन्वेस्टिगेट द होल क्राइम अराउंड होमिसाइड, एंड दैट एग्जैक्टली इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट कॉर्पस डेलिक्टाई। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स पिक अप आवर क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is cephalic index of Indian population is. Now it's a very important question. Again, a very direct, very simple question that has been asked many number of times. But the importance is not only to answer this question. The importance is to understand everything around cephalic index. First of all, let's see what is the answer here. The answer here would be option number B, which is mesocephalic. Okay. Now let's talk about cephalic index, and cephalic index is maximum breadth of skull divided by maximum
length of skull multiplied by 100, because ये इंडेक्स जो है ये परसेंटेज इंडाइसिस है. ओके, जब ये कैलकुलेशंस रिसर्चर्स ने करी थी, दे केम अप विद 3 डिफरेंट रेफरेंस इंडेक्सेस, और वो थे सिफेलिक इंडेक्स इन द रेंजेस ऑफ 70 to 75%, or you may find cephalic index in the ranges of 75 to 80%, which is the next slab, or you may find cephalic index in the ranges of 80 to 85%. तो हम क्या देख रहे हैं, जिस तरीके से हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, द सिफेलिक इंडेक्स का रेफरेंस रेंज बढ़ रहा है, विच मीन्स फ्रॉम द टॉप कमिंग टू द बॉटम द न्यूमरेटर इन द इक्वेशन शैल बी इंक्रीजिंग अ लिटिल बिट. यानी कि न्यूमरेटर जैसे जैसे बढ़ेगा, आपका जो फ्रैक्शन है उसके ज़्यादा आने की चांसेस होते रहेंगे. इसीलिए सबसे पहले सिफेलिक इंडेक्स को बोला जाता है डॉलिकोसिफेलिक, also known as long-headed people. Okay, then second is called as mesaty cephalic, also known as medium headed people, and third is called as brachycephalic, also known as broad headed people. Remember, M for mesaty, M for medium, and similarly B for brachy, so B for broad headed people. Okay, long headed people are Negroes, medium headed people are Caucasians, that is European white, and broad headed people were found to be Mongolian race. Okay, so cephalic index basically is an indicator of रेस. सिफेलिक इंडेक्स से हम रेस डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके, इट्स एन इंडेक्स विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्कल, सो इट्स अ बोनी इंडेक्स. द कैलकुलेशन इज डन as per the equation which is shown here on the board, and the reference ranges are 3. The population falls either as dolichocephalic or mesatycephalic or brachycephalic, and depending upon किस reference range में population आ रही है, we may be able to comment about their race. Okay, as I said earlier, most of the Indian population has mesatycephalic indexes. Okay, आगे चलते हैं. Let's take up question number 3. Question number 3 is bony index which is helpful in determination of sex is. Sexual determination के लिए हम कौन से bony indexes पे realize करते हैं? The options are ischiopubic index, radiohumoral index, alar index, or both A and C. The correct answer here is both A and C. Ischiopubic index and alar index दोनों ही indexes जो हैं, ये जो calculation है बोनी, they are helpful in determination of sex. Now इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन के चैप्टर से आते हैं जहां पर मल्टीपल इंडेक्सेस हैं और जिनको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लेट्स ट्राई एंड क्रिएट अ टेबल फॉर most of these indexes and I will tell you
how to remember the table. The first is indexes related to race. और अभी हमने देखा one of the indexes which is related to race is cephalic index. The second thing that you need to remember about determination of race is long bone ratios. So wherever you see any index which is basically nothing but a calculation of long bone ratio, यानी लॉन्ग बोन के लेंथ की रेशो की कैलकुलेशन है, वो रेस के डिटर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. कौन कौन सी होती हैं? रेडियो ह्यूमरल इंडेक्स, ओके, देन टिबियो फेमोरल इंडेक्स, इंटर मेम्ब्रल इंडेक्स. इन सभी इंडेक्सेस के कैलकुलेशन में लॉन्ग बोन के रेशियोज को कैलकुलेट किया जा रहा है, इसीलिए ये सारे इंडिकेटर्स हैं रेस के. दूसरा आपको याद रखना है स्टेचर के लिए यूज होने वाले इंडेक्स या फिर इक्वेशन. और स्टेचर के लिए यूज होने वाले इंडेक्स या इक्वेशन में आपको दो नाम याद रखने हैं. नंबर 1 इज कार्ल पियर्सन्स इंडेक्स या फिर कार्ल पियर्सन्स फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टेचर. एंड सेकेंड you need to remember Glessner and Trotter index or Glessner and Trotter formula which is used for calculation of stature. इनके सिवाय most and the majority of indexes और formulas जो हम questions में देखते हैं, they all are useful in determination of sex. So अगर हम ये देखें what are the indexes which are useful in determination of sex, the answer is ischiopubic index, alar index, sacral index, Ciliotic line index, mandibular canine index, Hurtle's law, Ashley's rule, foot print ratio, and costal cartilage calcification pattern. Okay, so what do we see in this whole table is there are lots and lots of ratio, there are lots and lots of formulas, और easy नहीं है कि हम ये सब कुछ याद रख पाए कि कौन सा फॉर्मूला या कौन सा रेशो किस डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए है. लाइक रेस के लिए कौन सा है, स्टेचर के लिए कौन सा है, सेक्स के लिए कौन सा है, एज की अभी हमने बात ही नहीं की है कि उसके लिए बहुत सारे बोनी फॉर्मूलास की हम बात नहीं कर रहे. ओके, सो व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर इज टू थिंग्स. नंबर 1,
स्टेचर के इंडेक्सेस को याद कर लो, वो बहुत सिंपल है, कार्ल पियर्सन्स इंडेक्स and Glessner and Trotter index. So if anybody is asking you about Carl Pearson's index and Glessner and Trotter index, it means the person is having a talk about calculation of stature. Then second चीज जो आपने याद रखनी है is cephalic index is useful in determination of race, which is very simple because it's one of the most commonly talked about index from skull. एंड एक और चीज रेस के बारे में याद रखनी है, इज एनीथिंग विच इज अ कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग बोन रेशियो, रेडियो ह्यूमोरल यानी लॉन्ग बोन्स की बात कर रहे हैं, रेडियस ह्यूमरस, टिबियो फेमोरल यानी कि हम टिबिया एंड फीमर की बात कर रहे हैं, इंटरमेम्ब्रल इज अपर लिम वर्सेस लोअर लिम का रेशियो, तो इंटरमेम्ब्रल रेशियो, जहां पर भी लॉन्ग बोन्स की रेशियो की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट रेस. रेस्ट ऑल द इंडाइसेस are helpful in determination of sex. Okay, so hopefully इस तरीके से exclusion से भी हम याद रख सकते हैं, so that in the examination we don't mess up. Okay, let's take up our next question. The question is, in the identification of sex through pelvis, the feature determining female pelvis is it prominent pubic tubercle, acute subpubic angle or prominent preauricular sulcus, या फिर obtuse greater sciatic notch angle? The correct answer in this case is option number C, which is prominent preauricular sulcus. Now whenever we talk about determination or of sex from a pelvis, there are few things that needs to be very solidly engraved in every student's mind. Is pelvis is the single best bone for sexual identification. The accuracy is 95%. Okay, so क्या पेल्विस में 3-4 डिफरेंसेस होते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल? नो, डिफरेंसेस आर मल्टीपल. But what are those 4 very obvious differences in a pelvis that once you hold a pelvis in your hand and you look for those 4 differences, you are certain you have solved the puzzle कि ये मेल है या फीमेल पेल्विस है. ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं. नंबर 1, प्री ऑरिक्यूलर sulcus, which is basically an indentation groove on the inlet of the pelvis right in front of the sacroiliac junction, caused by sacroiliac ligament. Okay, ये preauricular sulcus मेल्स में ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है और फीमेल पेल्विस में प्रेजेंट होता है. ठीक है. दूसरा होता है सब pubic angle. Males tend to have an acute subpubic angle which is less than 90 degrees. Female tends to have more obtuse greater than 90 degrees because they have bigger pelvic outlet. तीसरा होता है greater sciatic notch. Okay, males tend to have this kind of a greater sciatic notch. Okay, whereas females tend to have this kind of a greater sciatic notch. Now the greater sciatic notch which has been drawn for male, अगर उसको आप ध्यान से देखें तो ये है wide
एंड शैलो। या फिर एक और तरीका है इसको डिस्क्राइब करने का, एंड दैट इज द एंगल ऑफ ग्रेटर शियाटिक नॉच इन मेल्स इज मोर obtuse, whereas in females, if you see greater sciatic notch, it is narrow and deep. So it is not wide, it is narrower and it is deep. The second way of stating the same thing is that the angle of greater sciatic notch is acute. ओके, सो सेम थिंग को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज हाउ ग्रेटर शियाटिक नॉट्स आर प्रेजेंट इन रिस्पेक्टिव सेक्सेस. एंड फोर्थ इज pubic tubercle. Males tend to have prominent pubic tubercle and females tend to have non-prominent pubic tubercle. These features in a respective matured male and female pelvises are very wonderfully expressed, and thus if you compare a male and a female pelvis, these four features instantly makes you recognize the correct identification and makes you have the correct diagnosis of sex. Okay, let's take up next question. Feature of male sex are all except, okay, in the skull. So it is now what we have done is we have shifted our focus from previous question which was focused on pelvis to now we have shifted our focus to skull, क्योंकि मेल और फीमेल स्कल में भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचरल डिफरेंसेस होते हैं. सो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पर आपको पेल्विस नहीं स्कल के बारे में पूछा जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल, द आंसर इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट मेल स्कल टेंड्स टू हैव ऑल एक्सेप्ट prominent frontal eminences. ओके, देखते हैं हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, स्कल इज द सेकेंड बेस्ट bone for determination of sex. The accuracy by skull is 92%. So fairly comparable with pelvis, but pelvis is 3% more accurate as the studies results have shown in determination of sex. Now when we talk about male and female skull, okay, there are many differences between male and female skull, but the important ones are, number one, forehead. Males tend to have steeping or sloping forehead. Females, on the other hand, have rounded forehead, and that is the reason that frontal eminences are more prominent in females and they are not prominent
in males. Now remember this very, very clearly. This is one of the only things that is more prominent in a female skull as compared to a male skull. Rest, most of the things are more prominent or bigger or heavier in male skull only. यानी कि अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो मेल स्कल इज मोर वॉल्यूमिनस. अगर हम बात करें सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस की, मेल स्कल्स हैव मोर प्रोमिनेंट सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस. अगर हम बात करें ग्लैबुला की, द मेल स्कल हैज मोर प्रोमिनेंट ग्लैबुला. अगर हम बात करें मैस्टॉइड प्रोसेसेस की, तो मेल स्कल्स हैव मोर प्रोमिनेंट थिक ट्रायंगुलर मैस्टॉइड एज कंपेयर टू फीमेल्स विच हैव ऑलमोस्ट नॉन प्रोमिनेंट मैस्टॉइड्स. अगर हम बात करें मसल अटैचमेंट रिजेस की ऑन द स्कल सरफेस, दे आर मोर प्रोमिनेंट on male skull. Okay, remember like this, the only thing that is more prominent in a female skull is frontal eminences, because their forehead is rounded, not steeping or sloping kind of a forehead. Okay, let's see next question. A doctor examines physically a 14-year-old child on his consent. The parent of the child alleges foul play and accuses the doctor of assault. The correct statement is: doctor is guilty. The age for taking consent is 18 years. Consent is not important for physical examination. And option number D, that doctor is safe. The correct answer in this is option number D, that doctor is safe. और उसका रीजन है the age for consenting. So अगर हम consent की बात करें, a child less than 12 years consent for anything shall come from parents or guardians. Got it? More than 12 years child can consent for self physical examination, but not for any surgical procedure. And when a person is greater than 18 years can consent for surgical procedure, because that this person has gained मेजॉरिटी. सो ये तीन जो एज ग्रुप्स हैं, ये कंसेंट को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. इसीलिए हम कहते हैं 12 इयर्स ऑफ एज इज द एज फॉर बेसिक कंसेंटिंग. ओके, बेसिक कंसेंटिंग की एज क्या होती है? 12 साल. 12 साल से छोटा बच्चा किसी भी चीज के लिए कंसेंट नहीं दे सकता. वी नीड टू टेक द कंसेंट ऑफ द गार्डियंस, बट इफ द चाइल्ड इज मोर देन 12 ही कैन गिव बेसिक कंसेंटिंग. बट इफ द कंसेंटिंग इज टू बी रिक्वायर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर विच इज, even if it is done for the betterment of the person, but it is known to produce harm to the body, like surgery. Okay,
उसके लिए कंसेंट 18 प्लस में ही मिलेगी, या फिर if it has to be done on a child who is more than 12 but less than 18, still the consent has to be coming from the parent or the guardian. Okay, next question, which is question number 7. Spacing of jaw is seen in a very important concept in identification when we talk about aging through understanding dentition. Okay, the options are 12 to 15 years of age after eruption of third permanent molar, between 14 to 17 years of age, or after eruption of first temporary molar. The correct answer is option number C. Let's talk about spacing of jaw. Let's see ये कॉन्सेप्ट होता क्या है. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना पहले ये देखते हैं that if you look at the jaw of a child, so मैं यहां पर एक चाइल्ड का मैंडिबल बना रहा हूं, ठीक है. इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 and 7. It contains 7 alveolar spaces. Alveolar spaces क्या है? Alveolar spaces are the bony alveoluses from where the teeth crops out, जहां से दांत निकलते हैं. Now we know that when a child matures into an adult, he tends to have 8 teeth in one quadrant. हमारे सभी क्वाड्रेंट में ऊपर 2 मैक्सिलरी अप क्वाड्रेंट, 2 मैंडिबुलर नीचे क्वाड्रेंट, हमारे सभी क्वाड्रेंट में 8 दांत होते हैं. इसीलिए टोटल काउंट होता है 32 ऑफ परमानेंट टीथ. बट अ चाइल्ड इज बोर्न with 7 alveolar spaces in the mandible. Now, what happens when this child grows? See, when this child is growing, this mandible, the angle of mandible regresses. As a result, 1 2 3 4 5 6 7. As a result, a space is created right at the angle of mandible for the eruption of the 8th tooth. 1 2 3 4 5 6 7 and a space is created. Now, which is this 8th tooth going to be? So अगर आप permanent tooth देखो, this 8th tooth is the lateral most tooth. और हमारी डेंटिशन में lateral most tooth कौन सा होता है? It's the 3rd परमानेंट मोलर. यानी कि 3rd परमानेंट मोलर के इरप्शन के लिए जॉ में स्पेस ही नहीं होता, which means if 3rd permanent molar has to erupt, first of all a space has to be created for it. Okay, so spacing of jaw happens only for 3rd permanent molar. Okay, now 3rd permanent molar, it erupts in an age range of 17 to 25 years. Okay, और उससे पहले जो दांत आता है that is 2nd permanent molar,
उसका इरप्शन होता है between 12 to 14 years. Okay, now spacing is a phenomena which happens between the eruption of second permanent molar and third permanent molar. So the window time period that we have for spacing is between 14 and 17, because second permanent molar may erupt as later as 14 years of age and third permanent molar may erupt as early as 17. तो स्पेसिंग का विंडो क्या है? 14 से 17 साल. यानी कि एक चाइल्ड की डेवलपमेंट में, उसकी ओरल कैविटी में, व्हेन द सेकेंड परमानेंट मोलर हैज ऑलरेडी इरप्टेड somewhere between 12 and 14 years of age, after that the space starts to be created for the eruption of third permanent molar, and once enough space is created, the third permanent molar starts to erupt out, and the window time period for that is 14 to 17 years. Okay, so you got two informations in this question, or the explanation is that what is the window time period for the spacing to happen, and second, spacing कौन से दांत के लिए होती है? वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड परमानेंट मोलर के इरप्शन के लिए होती है. Okay, let's take up question number 8. The dental representation assigning positive and negative signs for eruption in upper and lower quadrants respectively is called as. यानी कि वो डेंटल इरप्शन रिप्रेजेंटेशन जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगा करके दिखाई जाती है, उसका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड एज हैड्रप सिस्टम. ओके, लेट्स सी वेरियस डेंटल रिप्रेजेंटेशंस. डेंटल representations. Okay, so the first is universal method. You draw a quadrant. This is right upper quadrant, left upper quadrant, left lower quadrant and right lower quadrant. और आप सबसे पहला फिगर दोगे टीथ नंबर 1 का टू दी राइट अपर क्वाड्रेंट थर्ड मोलर, और उसके बाद में इंक्रीजिंग नंबर देते जाओगे till you reach the right upper quadrant central incisor, which will be labeled as tooth number 8, and then you cross over to the left upper quadrant and take the tally further, ताकि लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के थर्ड मोलर को मिले टूथ नंबर 16, and then from there you come down. So left lower quadrant third molar becomes 17, and now you move medially back again, so that left lower quadrant's central incisor is tooth number 24, and then you cross over to right lower quadrant central incisor, which is tooth number 25, and similarly you end by giving tooth number 32 to right lower quadrant third permanent molar. इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं which starts from right upper quadrant, move to left, then goes down and then ends on the right lower quadrant, is universal method of dental representation. Then one system is called as Hadrup system, in which you again use the quadrant methodology, but those teeth which have erupted in the upper quadrant, उनके स्पेस में आप प्लस डालते हो, और अगर कोई टूथ इरप्ट नहीं हुआ है तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो, वहां पर कुछ भी मत साइन डालो. एंड दोज टीथ विच आर साइमल्टेनियसली इरप्टेड इन द लोअर क्वाड्रेंट,
उनके लिए आप माइनस का साइन डालते हो. सो माइनस डज नॉट मीन the tooth has not erupted. Minus means the tooth has erupted in the lower quadrant. Okay, that's Hadrup system. Then one is called as the Palmer system. Palmer system को हम कैसे दिखाते हैं? Draw a quadrant. You label teeth from medial to lateral. Each quadrant having 8 teeth. All the teeth which have erupted, you put a plus sign, and if a tooth has not erupted, you put a cross sign. So cross means वो tooth erupt नहीं हुआ है, plus right sign means वो tooth erupt हो गया है. Okay, and then most importantly is the FDI system, also known as 2-digit dental representation. To understand FDI system, the first thing we need to understand कि FDI system में सबसे पहले तो quadrants को नंबर दिया गया है. Right upper quadrant is given as quadrant number 1, left upper quadrant is quadrant number 2, left lower is quadrant number 3 and right lower is quadrant number 4. और करना क्या है? Now you have to prefix the quadrant number given to the Palmer system. यानी कि अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें जिसमें हमने अभी पामर सिस्टम को देखा था, एंड दिस क्वाड्रेंट इज लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट. लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट का नंबर क्या है? 2. सो सेंट्रल इंसाइजर विल बिकम टूथ नंबर 21 क्योंकि 2 को प्रीफिक्स करना है आपने हर डिजिट के साथ में. लैटरल इंसाइजर बिकम्स टूथ नंबर 22, कैनाइन बिकम्स टूथ नंबर 23, फर्स्ट प्रीमोलर बिकम्स टूथ नंबर 24, second premolar, first molar, second molar, third molar and so on. Left lower quadrant में 31 की सीरीज होगी, right upper quadrant में 10s की सीरीज होगी, 11, 12 and subsequently till 18, and right lower quadrant में 40s की सीरीज होगी. This kind of a representation is called as FDI 2-digit representation. Then there is something which is called as a modified FDI. Modified FDI. Modified FDI क्या है? Modified FDI को जिस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज लिखी होती है उस तरीके से कर दिया गया है. इंग्लिश लैंग्वेज कैसे होती है? लेफ्ट टू राइट. सो मॉडिफाइड FDI में दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1, दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 2, but this becomes quadrant number 3 and this becomes quadrant number 4. So basically lower quadrants में 3 और 4 interchange हो गए. So modified FDI में यहाँ पर होगी 41 की सीरीज और यहाँ पर होगी 30s की सीरीज. That is the modification. That's all. Okay? So हमको ये dental representation formulas और उनकी टेक्निक्स भी याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती है. Okay, let's move forward and take up next question. In modified FDI method of dental representation, the numbering system of quadrant is, जो अभी हमने पढ़ा वही हमारे सामने आ गया. Right upper quadrant is 1, left upper quadrant is 2, right lower is 3, left lower is 4. So option number A itself is the correct answer here. Next one is, yeah, it's a picture based question now. So we have an X-ray for reference. The question is the age as per X-ray finding is. So basically हमें इस pelvis के X-ray को study करना होगा और उसके हिसाब से हमें देखना होगा age क्या है. Remember when we talk about X-ray of pelvis, we talk about
रूल ऑफ 7। पेल्विस के एक्सरे से हम 7 के मल्टीपल्स में एज बता सकते हैं। द फर्स्ट एज इज द एज ऑफ 7 itself, which tells us about the union of ischiopubic ramus. So ischiopubic ramus becomes a single ramus when the person is greater than 7 years of age. Then pelvis tells us the second age, which is age of 14. उसके लिए हमें यहां देखना होता है, and that is complete ossification of tri-radiate cartilage. और कंप्लीट ऑसिफिकेशन के बाद ट्राई रेडिएट कार्टिलेज हमें एक्सरे में नहीं दिखता, हमें दिखाई देता है पूरा ऑसिफाइड एस्टेबुलम, ओके, विच वी कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, विच मीन्स इन दिस एक्सरे द एज इज डेफिनेटली मोर देन 14, ओके। तीसरी चीज जो हमें पेल्विस में देखनी होती है वो देखनी होती है यहां पर, विच इज द फॉर्मेशन of iliac crest. Now iliac crest comes as a secondary epicenter on top of the iliac curvature. इसकी अपीयरेंस होती है अराउंड 15 years of age पे, और इसका फ्यूजन कंप्लीट होता है 21 years of age पे. So what we can see in the photograph, that is the X-ray, is that आइलियक क्रेस्ट अभी पूरी तरीके से फ्यूज नहीं हुई है विद द आइलियक कर्वेचर ऑन बोथ द साइड्स. इफ यू लुक एट द पिक्चर you can see a gap between iliac curvature and iliac crest very clearly. Gap is present, which means that the person has not yet attained the age of 21, okay. But if you look down at the picture, the age of fusion of head of the femur is 17 years. So head fuses with the shaft at the age of 17, which is completely seen fused in this radiograph, and so we say that the person here is more than 17 but less than 21, क्योंकि head of femur fused है पर iliac crest फ्यूज नहीं हुई है कंप्लीटली. सो बेस्ट पॉसिबल आंसर इज बिटवीन 17 and 21, okay. And this is the last question. Father of a girl alleges that his daughter has been forcefully married by a male. He has lodged a complaint of rape against the male. The female says she has married the male with her consent. The matter needs to be solved by the doctors on direction of the court, as the court wants to determine the age of the woman. What single X-ray is most important for her age determination? Now, a very pertinent question, okay. Why? Because this commonly happens in lot in society. The idea is, if a male marriage marriage is a female who is less than 18, then her consent for marriage is not valid, and so is her consent for sexual activity. So the allegation of the father proves to be right if she turns out to be less than 18. Her testimony in the court of law that she had married with her consent and participated in sexual intercourse with her consent has no value if she turns out to be less than 18. So क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. वो आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा एक्सरे करना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू डिटरमाइन वेदर द फीमेल इज मोर देन 18 और नॉट, और वो एक्सरे है एक्सरे ऑफ रिस्ट जॉइंट. एंड व्हाट डू यू नीड टू सी इन द एक्सरे ऑफ रिस्ट जॉइंट इज लोअर epiphysis of radius
which obviously is a part of wrist joint. तो हमें देखना क्या है, लोअर एंड ऑफ रेडियस का एपिफिजियल फ्यूजन हुआ है या नहीं हुआ है, और ये होता है फ्यूजन between 18 and 19 years. So if the lower end of radius is fused, it means that she is more than 18 years of age. Very, very important X-ray for determining the age, whether it is more than 18 or not. As such, age more than 18 or less than 18 is very critical. It's a big legal milestone. Okay, ठीक है. तो आज हमने ये क्वेश्चन करे. यू नो दैट इफ यू वांट टू कैच मी with any of your queries, you can contact me at Telegram app. The link would be livedaily.me/neetpg. As I told you earlier, Unacademy has unparalleled चीज़ें जो हर एक स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हैं फॉर देयर प्रिपरेशन ऑफ नीट पीजी एग्जामिनेशन अंडर देयर प्लस सेक्शन. ओके, लाइव क्लासेस हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, बट ट्रूली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इज इट्स अ ट्रूली स्टूडेंट सेंट्रिक प्लेस, बिकॉज इवन फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट देर आर मल्टीपल टीचर्स हु आर अवेलेबल ऑन बोर्ड, और स्टूडेंट के पास एक एम्पल ऑफ चॉइस रहती है कि वो कौन सा टॉपिक किस टीचर से समझना चाहता है, बिकॉज एवरी टीचर हैज़ अ डिफरेंट डिस्टिंक्टिव वे ऑफ अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ टॉपिक, and it is quite possible that different students may understand the same topic from different teachers. वो ऑप्शन भी अनअकैडमी में स्टूडेंट के पास में है. ये सारी चीज़ें आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे देख सकते हो, आई टोल्ड यू, गो एंड वॉच स्पेशल क्लासेस, और ये सब आप स्पेशल क्लास में देख सकते हो मेरे साथ tomorrow itself at 12 noon, जहाँ पर we are having a series of ongoing special classes. आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ पर जाकर के चेक कीजिए which are the special classes which are upcoming from various teachers. You can be a part of all those special classes live, and you can also watch all those special classes which have been done earlier by playback recording which is available for you. And after that decide for yourself that Unacademy का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट है या नहीं है. आई एम श्योर यू विल डिसाइड इन फेवर ओनली. आपने Unacademy का सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है? यू नीड टू डाउनलोड Unacademy लर्निंग ऐप इन योर फोन, या फिर आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से Unacademy की साइट पे जाके लॉगिन आईडी भी क्रिएट कर सकते हो. वंस यू हैव डन दैट, you all need to do is to go to manage goal section, जहाँ पर जा कर के you need to pick up NEET PG because आपका goal NEET PG है, and then a curtain opens up where you press plus so that you can get the subscription of the plus account. मैंने आपको पहले भी बताया सब्सक्रिप्शन लेते समय ध्यान रखिएगा, सब्सक्रिप्शन लीजिए बल्क अकाउंट का. इट विल गिव यू एन ऑप्शन टू टेक सब्सक्रिप्शन फॉर मंथ और few months basis, but that will not be sufficient for your preparation. You want to be committed till the time you appear for your NEET PG examination. So take bulk subscription for 12 or 24 months. आपकी बचत भी होगी and आपका कमिटमेंट भी अपने गोल की तरफ ही रहेगा. Once you have taken up a bulk subscription, remember my referral code जो कि आप यूज कर सकते हो, which is Dr. Sumit Live, to gain 10% more discount for you. ठीक है, इस चैनल पे बने रहिए. Remember my referral code is DRSUMIT Live. You can use this to get 10% discount on any subscription you buy. You can use this code. You can spread this code to anyone you like, because किसी को भी कुछ भी Unacademy से परचेज करना हो, this code will be valid for a 10% discount in that category. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सेम टाइम 5 बजे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. फोकस के साथ में अपनी प्रिपरेशन बनाए रखिए एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फैमिली इन दिस पैंडेमिक टाइम्स. बाय.